रमज़ान का महीना मुबारक हो, क़ुरआन का महीना मुबारक हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुहतरम सामिईन किराम और सामिआत और नाज़रीन किराम, आप सभी का इस्लामी तरीके से इस्तकबाल है। रमज़ान, क़ुरआन और हम की इस महफिल में इंडिया के टाइम 10:30 से 11:30 के दरमियान हमारा लाइव शो होता है अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी तक हमारे इस सेशन में बहुत सारे मेहमान आए हैं। जैसा कि आप जानते हैं, इस सेशन के 4 सेगमेंट होते हैं। पहला सेगमेंट होता है एक हिफ्ज करने वाले या नाजरा करने वाले स्टूडेंट का तारुफ, और दूसरा सेगमेंट होता है फिक़ही मसाइल, और तीसरा सेगमेंट होता है किसी भी एक पारे का खुलासा, जिसको आप कहते हैं एक जुज का खुलासा। और लास्ट में हमारा सेगमेंट होता है हदीस ऑफ द डे, यानी एक हदीस हम सुनते हैं और उसके ऊपर तदब्बुर करते हैं, उससे हमारे ज़िंदगी के लिए क्या फ़ायदे मिलते हैं, एक रिफ्लेक्शन के तौर पर हम उसको लेते हैं। तो अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे हमारे इस शो के अंदर मेहमान आए हैं। इससे पहले आप जानते हैं कि सीमा आंध्रा से एक स्टूडेंट, फिर उसके बाद तेलंगाना हैदराबाद से, फिर उसके बाद सऊदी अरब से, फिर उसके बाद फिर सीमा आंध्रा से, बल्लारी से, फिर उसके बाद सऊदी अरब से, यूके से और कनाडा से हमारे पास मेहमान आ चुके हैं। आज हमारे पास एक दो मेहमान हैं। पहले एक मेहमान और फिर सीधा उनके छोटे भाई भी, यानी कि 2 स्टूडेंट से इंटरव्यू लिया जाएगा, और ये दोनों भी स्विट्जरलैंड में रहते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इनके माँ बाप की मेहनतें कबूल करे, बच्चों की मेहनतें कबूल करे, इनके सारे सरपरस्तों की मेहनतें कबूल करे। और हमारे तीसरे मेहमान हैं हैदराबाद के रहने वाले और इंडिया के रहने वाले। तो गोया कि आज हमारे पास 3 स्टूडेंट हैं जो इंटरव्यू फेस करेंगे और कुरान मजीद पढ़कर सुनाएंगे। इसी तरीके से हमारे लिए वो बताएंगे कि इस जर्नी में कुरान मजीद को याद करने और हिफ्ज करने और नादरे के दौरान उनके लिए क्या क्या सबक मिले और वो दूसरों को क्या एडवाइस देना चाहेंगे। हम ये भी बातें नन्हे मुन्ने बच्चों से मीठे मीठे अंदाज में, प्यारे प्यारे अंदाज से उनके तजर्बात भी हम सुनेंगे, उनके जज्बात और उनके भावनाओं और उनके जज्बात का भी हमको ख्याल रखना है, उनकी बातें भी सुनना है। तो हम आइए चलते हैं इंटरव्यू की जानिब। तो हम चलते हैं, सबसे पहले हमारे इंटरव्यू के लिए स्टूडेंट मौजूद है स्क्रीन पर स्विट्जरलैंड से। तो आइए अब हम इनसे सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। What's your name? My name is Ubaid Mohammad. Masha'Allah. What's your father name? My father's name is Mohammad. Tell me about yourself. Well, I am 12 years old. I live in Switzerland and I'm studying in the 6th grade. Masha'Allah, Subhanallah. Okay, Ubaid Muhammad, can you describe your journey of Hifz or Nadara? Well, every day I go to school and spend 7 hours in the school. In the evening, I attend online Quran classes and recite the Quran. And I am also memorizing the Quran. Subhanallah. Yeah, please continue. I have memorized the 38 juz and I'm memorizing now the 29th juz. Allah Akbar. Subhanallah. May Allah subhanahu wa ta'ala ease everything for you. We would like to hear your recitation of the Holy Quran. Which surah can you recite for us, inshallah? Which surah? I can recite today the Suratul Muzammil. Suratul Muzammil. Okay, Ubaid Muhammad, you can begin now, inshallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو ينقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن
ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة. فمن شاء ذكره فما شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. Subhanallah, Subhanallah. What a beautiful recitation. May Allah subhanahu wa ta'ala reward you, your parents, your elders, and your ustaz in abundance, and also reward the viewers of viewers for listening. Okay. Do you know, Ubaid, what you have achieved and what kind of reward which Allah subhanahu wa ta'ala has promised to the people who are reciting Holy Quran regularly? Alhamdulillah, Alhamdulillah. Indeed, Ubaid, it is a great achievement. Alhamdulillah. May Allah subhanahu wa ta'ala accept. And the next question is, finally, before we conclude the interview, what your suggestion or advice for those who think it is very hard to manage both the things, contemporary education, school, colleges, along with Islamic studies, Hifz and Nadira? What is your suggestion or advice for them from your side? Well, our Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam said, "Khairukum man ta'allama al-Qur'ana Masha'Allah, Subhanallah. Ji. The best amongst you is the one who recites the Qur'an or memorizes the Qur'an and teaches others." Learning the Qur'an is not a burden, it is an obligatory act. Parents must encourage children to learn the Qur'an with the help of Allah, with good planning and good time management. This can be easily achievable, inshallah. MashaAllah, Subhanallah. Okay, Ubaid, thank you very much for joining us. It was a pleasure to meet you. May Allah subhanahu wa ta'ala make you coolness of your
parents' eyes, and successful in both the world. Inshallah. Who is the next guest for our session, inshallah? Can you call upon? Okay, thank you. Thank you. तो ये थे उबैद मोहम्मद जो हमें बतला रहे थे उनके अपने चैलेंजेस और किस तरीके से वो मेहनत करते हैं, किस तरीके से स्कूल भी जाते हैं और किस तरीके से कुरान में के लिए भी टाइम निकालते हैं और बेहतरीन अंदाज में उन्होंने सूरह मुज़म्मिल पढ़ा है। तो आइए देखते हैं हमारे नेक्स्ट मेहमान कौन है, छोटी उम्र के ये नन्हे मुन्ने मेहमान। तो आइए अब इनसे भी हम इंटरव्यू लेते हैं और इनसे भी हम जानते हैं कि इनका क्या एक्सपीरियंस रहा। ओके, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। What's your full name? My name is Umar. Omar Mohammad, mashallah. What's your father's name? लगता है लाइन बिस्मिल्लाह, लगता है कनेक्शन हमारा फिर देखते हैं जूम पर फिर से कनेक्ट हो पाएगा। ओके ओके, उमर मोहम्मद, you there? Yes. Yes, mashallah. What's your father's name? My father's name is Ph.D. Subhanallah. Okay, tell me about yourself, Omar Mohammad. Well, I'm 9 years old and I live in Switzerland. And I study in the 3rd grade. Subhanallah, you are living in Switzerland, Masha'Allah, very good. Okay, can you describe your journey of Hifz? Well, every day I go to school and spend about 6 or 7 hours in the school. And in the evening, I attend the Qur'an class and recite the Qur'an. And I am memorizing the Qur'an. I have already memorized the 30th juz, and now I am memorizing the 29th. Subhanallah, Subhanallah. Okay, Omar Muhammad, we would like to hear your recitation of the Holy Quran. Which surah can you recite for us, inshallah? Well, I can recite the Surah Waqi'ah from the first ayah till the 40th ayah. Okay, Omar Muhammad, inshallah, you can begin now. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء بسا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريك وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينظرون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا وسلاما
من الآخرين. Subhanallah, Masha'Allah, Barakallah. What a beautiful recitation. May Allah subhanahu wa ta'ala reward you, your parents, your elders, and especially your ustaz in abundance. And also reward the viewers for listening. Okay. You know that Allah subhanahu wa ta'ala has promised the reward. What kind of reward and ajr which Allah subhanahu wa ta'ala has promised. Indeed, it is very good job, Omar Muhammad. Masha'Allah, good job. Okay, the next question is, finally, before we conclude the interview, what's your suggestion or advice for those who think that it is very hard to manage both the things, contemporary education, school, college, along with Hifz, Nazara, Islamic studies? What is your suggestion from your side for those people? Well, Allah said in the Quran this: رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. We must have a balance in our daily schedule. Parents must encourage children to learn and memorize the Quran. Allah and our Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam love those who learn Quran, and learning Quran will be never stressful, inshallah. With good planning and time management, it is achievable. Allahu Akbar. You have expressed in very good manner, alhamdulillah, and inshallah it will be beneficial for the people who are thinking in this way, inshallah. Jazakumullah khairan. Okay, Umar Muhammad, thank you very much for joining us. It was a pleasure to meet you. May Allah subhanahu wa ta'ala make you coolness of your parents' eyes and make you successful in both the worlds, inshallah. Now, inshallah, you can take a leave. Inshallah, we will continue for interview with our next guest. Okay. For authentic Islamic information, please log on to www.askislampedia.com.